Hello and welcome to the English class of grade 12. We are going to study the first chapter from our NCERT book, Flamingo. Flamingo is a comprehensive textbook for class 12 for the English core course. But first of all, let us know why is this book named Flamingo and what is a flamingo? Now flamingo is this bird. If you can see here, this bird has a long neck and long legs. Okay, this is called a flamingo. And why this book is named so? Because you see, flamingo gives a idea that you are what you eat. It means it reflects the stark idea that as you peruse the book Flamingo, you will have a plethora of thoughts, imaginations, ideas and expressions. That simply means when you start reading the stories in this book, you suddenly just, fall into it. You dissolve into it. You forget about other things. You start feeling what you are reading. That is why we have this book named as Flamingo. Now the first story here has a title, The Last Lesson. The author is Alphonse Daudet. Let's know about the author. Now he was born in 1840 and he passed away in 1897. He was a French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, which was in 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Now, Prussia was an area that covered different nations such as Germany, Poland, and parts of Austria. So, these places, where there was a collection of 2 to 3 different nations, that entire area was called Prussia. So, the war was between France and Prussia, and France was defeated. Now in the story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. That is to say, for example, once Prussia has won the war, so they take over France. And there are 2 main areas here, districts of Alsace and Lorraine. These 2 districts are of France and they have now come under the Prussian hands. Okay, so let us see what kind of effect it had on life at school. Now we are going to come across these expressions in the story. We'll keep an eye about them. Now let us start. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. So you see, these are the words of a student who is telling us that he was already late in the morning for school and he was in a dread of scolding. Dread means fear. Okay, when we are dreaded, it means we are scared, fear, afraid. And scolding, that is when somebody says something to you rudely in an annoying manner, जिसको हम हिंदी में डांट कहते हैं. ठीक है, सो डर था डांट पड़ने का, because the teacher M. Hamel ने कहा था कि participles का जो टॉपिक है उस पर वो सवाल पूछेंगे एंड जो स्टूडेंट था उसको तो उसका पहला शब्द तक नहीं पता था. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. So एक पल के लिए तो मैंने ये सोचा कि मैं भाग जाता हूँ एंड बाहरी दिन गुजार लूँगा. ओके, एंड क्योंकि कितना प्यारा मौसम था, there was sunlight, it was bright. The birds were chirping at the edge of the woods. Now remember, whenever we are talking about poems, मैंने आपको बताया था that birds की जो sound होती है, it's chirping, twittering, chattering, इस तरह के words होते हैं. So this is chirping. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling.
Okay, now you see we're talking here about Prussian soldiers. Why? Because we know that there was a war between Prussia and France जहाँ पर Prussia won over the war. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. So ये जो बाकी सारी चीज़ें थी ना, जो चिड़ियाँ थी एंड जो सॉ मिल में काम चल रहा था ड्रिलिंग का, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जो आप अपनी ओर खींचती हैं, पार्टिसिपल्स के टॉपिक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. लेकिन हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि उनके अंदर हिम्मत थी अपने आप को रोकने की, कंट्रोल करने की उन सब चीज़ों से, एंड वो जल्दी से स्कूल की तरफ चले. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board is like a notice board, okay, जिस पे notices लगाए जाते हैं, कोई डेली headlines होती हैं, updates होती है, कोई information होती है. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? So, bulletin board पे, as I said, informations share होती हैं. So, पिछले 2 सालों से जितनी भी bad news थी फ्रांस के लिए, वो वहीं bulletin boards पे मिलती थी, जैसे कि हारी हुई युद्ध, जंग जो होती हैं, या जो कमांडिंग ऑफिसर है उनके जो नए ऑर्डर्स होते हैं. सो अब वो सोचते रहे बिना रुके कि अब क्या हो सकता है, ठीक है, अब क्या मामला हो सकता है. Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith, washer, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." So, हम तो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहे थे, कि देर ना हो जाए. फिर वहाँ पर जो एक ब्लैकस्मिथ होता है, वॉशर जिनका नाम था, ओके, वो वहाँ पर थे बुलेटिन बोर्ड पे. वो हमें पुकार के कहते हैं कि इतनी जल्दी मत करो, स्कूल का बहुत टाइम है अभी. I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. Now when we say all out of breath, breath means सांस, मतलब हम इतनी जल्दी जल्दी भागकर पहुंचे कि सांस जैसे फूल जाती है ना, इस तरह से. Usually when school began, there was a great bustle, which could be heard out on the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. So ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, आपके साथ भी हमेशा यही होता आया है. सुबह के टाइम जब हम स्कूल पहुंचते हैं, जब स्टार्ट होने वाली होती है क्लास, आप सब अपनी अपनी डेस्क्स पे जाते हो, ठीक है, उन्हें स्ट्रेट करते हो. सो बसल इज लाइक नॉइज, मूवमेंट एंड नॉइज. एंड जो लेसन्स होते हैं, हम उन्हें पहले एक रिवीजन की तरह पूछते हैं, फिर आप लोग जवाब देते हैं. सो जो छोटे बच्चे होते हैं वो पूरा लाउड वॉइसेस में आंसर्स देते हैं, एंड अपने जो हाथ होते हैं, हैंड्स ओवर अवर ईयर्स, अपने कानों पे रख लेते हैं, तो हमें अपनी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आती है. ओके, एंड टीचर का जो रूलर होता है वो टेबल पे मारते हैं, टू मेक इट, टू कीप द क्लास साइलेंट. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. देखिए, वो था एक नॉर्मल हालात, लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ बहुत शांत था. Still means no movement, no noise. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day, everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब you see, ये टाइम पे नहीं पहुंचे थे, ये इंस्टेड लेट पहुंचे थे. जब ये स्कूल के कंपाउंड में पहुंचते देखते हैं खिड़की में से क्लास की, कि उनके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे, एंड एम हेमल जो उनके टीचर थे वो क्लास में राउंड्स लगा रहे थे रोज़ के बीच में. ठीक है, आपकी जो रोज़ बनी हुई है क्लासेस में, डेस्क्स उनके बीच में जब हम जैसे चलते हैं ना, सो एम हेमल के उनके जो है हाथ के नीचे उन्होंने अपना दबा रखा था टेरेबल आयरन रूलर. स्केल जो था उनका वो आयरन का था. सो जब ये क्लास में पहुंचते, इन्हें दरवाज़ा
खोलना पड़ा एंड सबके सामने अंदर जाते हैं. सो सोचें, ऑब्वियसली आप भी क्लास चल रही है, आप लेट हैं, मुँह लाल हो जाता है, डर भी लगता है, शर्म भी आती है ना? But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ. एम हेमल ने जब मेरी तरफ देखा, टीचर ने, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात करी, बहुत अच्छे से बोला कि अपनी जगह पर बैठ जाएं. फ्रांस, मतलब स्टूडेंट का नाम था अब फ्रांस. हम शुरू ही करने वाले थे. दैट वॉज वॉट मिस एम हेमल जो टीचर थे वो कहते हैं. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. सो जब ये सेटल हो गए अपने डेस्क पे, उसके बाद फ्रेंड्स क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो उनके टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने अपना बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था एंड उनकी जो शर्ट थी आगे उस पर थोड़े झालर थे एंड एक ब्लैक छोटी सी कैप सिल्क की जिस पे एम्ब्रॉयडरी थी, डिज़ाइन था. लेकिन ये कपड़े तो वो सिर्फ इंस्पेक्शन वाले रोज़ पहनते थे या जिस दिन प्राइजेस होते थे. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. उस समय फ्रांस को पूरा ही स्कूल बड़ा अजीब लगा. Strange means अजीब and solemn that is शांत. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. अब एक चीज़ जिससे बहुत वो सरप्राइज हुए थे, इट वॉज दैट कि जो पीछे वाली बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पर गांव के लोग बैठे थे बड़ी शांति से. कौन कौन थे उनमें? उनमें था ओल्ड हाउसर जिन्होंने एक तिकोना कैप हैट पहन रखा था, पुराना मेयर जो था, पुराना पोस्टमास्टर एंड और भी काफ़ी सारे. Everybody looked sad. सब बड़े दुखी लग रहे थे. And Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. Now you can see this is our Hauser here, and he brought a primer जो उन्होंने अपने ऊपर रख रखा था and अपने knees पर जैसे जब बैठे होते हैं ना अपने ऊपर रखते हैं. And spectacle means चश्मा, नज़र का जो चश्मा होता है. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." Now, see. हर जगह बिल्कुल शांति थी ये बात सुनने के बाद. एम हेमल अपनी कुर्सी पे बैठकर बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं, मेरे बच्चों, आज मैं आपको एक आखिरी लेसन दूंगा, लेसन पढ़ाएंगे. बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. एल्सेस एंड लोरेन में जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको प्रुशियन वॉर ने जीतने के बाद टेक ओवर कर लिया था, अब वहाँ पर सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी. एंड जर्मन का जो नया टीचर है वो कल आएगा. सो ये आज आपका आखिरी फ्रेंच का लेसन है एंड सब बहुत ध्यान से सुने.